जैसे आपका कॉन्सेप्ट है IBBC का, ब्रेन को एक वेरी कॉम्प्लेक्स है। लाइटर कोर्स में मोहम्मद अली साहब बहुत सारी बातें करके गए, हमारा काम आसान करके गए हैं। तो मेरा टॉपिक है वाइट केयर फॉर मेंटल हेल्थ। एक आस्पेक्ट है, लेकिन ब्रेन इट्सेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो नॉट ओनली न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोएनाटमी, न्यूरोपैथोलॉजी जो अंडरलाइन नॉलेज है, उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट डॉक्टर्स भी इसको डील करते हैं। और स्टेट भी हमारे काम में नहीं आता। न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोफिजिशियंस हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्टों से भी आगे बढ़ के फिर स्पीच से लेकर रिहेबिलिटेशन साइंसेज वाले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसको डील करते हैं। और स्टिल मतलब सर्विसेज आर रिक्वायर्ड और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एक डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प करती है हमारे पेशेंट्स को, हमारे जनरल पब्लिक को। बहुत सारे एस्पेक्ट्स रमजान साहब ने जैसे बात की, उसी को लेकर हम फर्दर चलते हैं। वाइट केयर फॉर मेंटल हेल्थ, दैट इज द टॉपिक। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय रेस्ट ऑफ द कोलीग्स, अपना एस्पेक्ट कवर करेंगे। इसमें कुछ कॉमन सजेशंस हैं, वाइट केयर एंड देन हॉट केयर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। तो वी सी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इटसेल्फ क्या है? इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये WHO की डेफिनेशन है। There are 3 components or 2 components of health जो psychosocial aspects है, that is almost 66% of health। और वो मिलके हम जो ब्रेन साइंस से रिलेटेड लोग, साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग और सोशल एस्पेक्ट वाले, वो इस तरह हेल्थ सेगमेंट को कवर करते हैं। और डेफिनेटली उसमें जैसे बात हो रही थी नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट की, डॉक्टर असीम साहब ने बताया, डॉक्टर ahmed साहब ने, कि नंबर लेस है, प्रॉब्लम इज मोर। तो उसको कैसे केयर करना है? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प अस अ लॉट। सो इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। गोइंग ऑन फर्दर, यू सी इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो इट्स encompasses 1/3 of health already। सोशल कंपोनेंट आप सब कंबाइन कर लें तो 2/3 of the health। तो we have to give weightage to this. And how can we give weightage? Different aspects may we see. What is mental health meaning? A sense of internal well-being, one of the component, and then feeling in line with one's beliefs, feeling that faith with oneself, and feeling positive and optimistic about life. 4 components, 4 aspects of well-being. That is something which can contribute towards health. And with further we see in the state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life and can work productively and is able to make a contribution. So there are 3 components that we see कि आपके potentials का, आपकी abilities का आपका idea हो, आप अपने stresses को cope कर लें और कितने productive हैं। इन तीनों aspects में अगर आप contribute करते हैं, definitely that is something which is going to help further. So well-being itself, they say, it's experience of health, happiness and prosperity, and it includes having good mental health, high life satisfaction, a sense of meaning or purpose, and the ability to manage stress. Again, उसी की elaboration है, different aspects. Another way we see it is physical health, is spiritual, mental, family, emotional and social health. All areas will join that would give us identity, connectedness, security, autonomy, meaning, growth and joy. So all these domains of well-being, about considered 8 domains, we can all achieve by combining different aspects. And then we see mental health and well-being, different components like purpose in life, attitude, then having control of one's own health, relationship with others, that your socialization, engagement from a busy you are, it's not your money, and then it's your basic needs. आपकी क्या वो आपको provide करती है और कितनी आपकी access में, that are all important mental health and well-being. And why it would go together? Definitely, each would affect the other. It's the psyche and soma. Soma is body, body affects the psyche, mind of the person. And then psyche affects the soul. तो connectively jointly अगर हम दोनों aspects को better way में deal करें, तो that gives us more and more positive impact that we see. So mental health is a state of mind that allows you to endlessly cope with the
life will let flu, and this state of mind can at any time be eroded by risk factors or supported by protective factors. Risk factors की बात हो रही थी जैसे current हमारा जो political crisis है, then economical situations हैं, previously COVID था, then we had a crisis of floods. So many risk factors are there, they can affect our health. और definitely इसमें हमारी stress variabilities, हमारे productive factors कितनी हैं, आपको social support कितनी है, आपको सहूलियत available क्या है, they can all help us. They can be more productive and more protective regarding all these aspects. You see, so mental health is more than the absence of mental disorders. It's a broader aspect. If we include behavioral sciences and the burden of disease and different aspects, it takes a higher level. So mental health is our ability to respond to different challenges of life. And going further, you see around 20% of the world children and adolescents, they have got mental disorders or problems. So seeing our youth, seeing our children, third world country here, 20% of them, they have got some of the problems and some of them they may be having disorder. So we need to work more on preventive aspects and then those who are sufferers, for them management, assessment and rehabilitation. That shall be our goal. And going on further, mental health and substance use disorders, they are the leading cause of disability worldwide. Yes, they are. If we include World Bank as a survey and different aspects में substance use disorder, mental health और neuropsychiatric aspects इसमें neurological भी शामिल कर लें, तो burden of disease जो है total जो World Bank calculate करता है, it amounts to 43%. The rest of the disorders एक तरफ हैं, neuropsychiatric disorder and substance use disorders जो है almost half of the burden carry करता है. तो उसमें prevention and proper management is the solution. And then about see this 800,000 people, they die, they commit suicide. And we can save so many lives by focusing on definitely proper mental health. So we can save so many lives और बड़े बात में जिससे एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने जो है पूरी इंसानियत को बचाना. So preventive aspects में we can help so many people. And war and disaster तो हमारे यहाँ जो चल रहा है different aspects में, पहले bomb blast थे and then current economical and political disaster has got large impact on mental health and psychosocial well-being. लेकिन हमने ज़्यादा इसको face करना है, अपनी resilience show करनी है. जैसे हमने साहब ने बात की कि मुल्क नहीं छोड़ के चले जाना. Usually लोग economical or social factors they would go, and then flood, earthquake and pandemics they would affect us. And mental disorders, they are important risk factors for other diseases such as unintentional or intentional injury. They would contribute both, and these negative effects they would affect our performance. They would reduce our effectiveness, causing you to be forgetful. आप अपने पीरियड्स को निगलेक्ट करते हैं, आप वर्क से एब्सेंट होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी की वजह से इंसान अपनी बातें. It's your condition of mind if you talk about, and you make poor judgment. So our whole life is jeopardized because of this very mental health. And Ministry of Sport says in the 2020 study that 792 million people live with mental health disorders. And this is slightly more than 1 million, about 10% of the population. So many of our colleagues, they can help, they can be helped, and we can save our nation definitely in all aspects. The importance of mental health, what can help us, awareness can help us in handling stigma, which is one of the reasons people don't seek help. It can affect our physical health, it can improve physical health by focusing on mental health. It is related to emotional well-being, and it plays a crucial role in relationships. So all the 4 areas we can improve by focusing on appropriate mental health. Or its importance are like crimes and victimization, and then productivity and financial stability के साथ, and mental health awareness helps in curbing suicide rates, as we have talked about earlier. Or it improves quality of your life. It is related to societal factors. और कैसे factors
हैं, क्या हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. How to maintain their health? Some of the suggestions, some of the tips, जैसे So mindfulness, try daily exercise and focus on it only to calm your mental situations. There are many of our psychologists they can guide you work better. Mindfulness can help us to definitely maintain well-being. Then learn how to address emotions and Deal with them. Definitely, emotional intelligence का ज़माना है. Those people who are more successful in their jobs, in their lives, who have got better EQ. It's not only IQ based. EQ is also helping us getting better jobs and managing challenges of our lives. then it depends thinking through Fixed perspectives. So broader mental health areas आप मदद करते हैं कि आप alternate ways की तरफ approach करते हैं and select a realistic approach. ये भी preventive aspect है कि आप realistic होते हैं चीज़ों के बारे में. Education about Parenting skills, which is very, very important. By having a proper mental health, आप parenting skills आपकी improve करती हैं, parenting skills improve करें, तो definitely आप better generation की तरफ जाएंगे. Surround yourself with healthy company. avoid alcohol and substance use, which is a big method, And if you need, then acquire help. Don't stigmatize. Educated लोग होते हैं, psychology, physiology से बात होती बड़ा link है. All of us can contribute to raise awareness. Brain awareness weak है, to counter stigma, so that people can take help. so if you see the being of mental health, self-care, it's more of physical, psychological, emotional, spiritual, then it's more of personal and professional. All these areas they can be affected. And how to promote well-being? Healthy living hack some of the tips. Change your thinking or reframe it. Very, very important aspect that can help you. So is a technique to change the way you look at the thing in order to feel better. Forget powerlessness, rejection, despair, failure and stress level. It makes us more vulnerable to negative situations. Focus on your strengths, learn from the stress you are under, look for opportunities, seek for positive and major change definitely. And change your behavior. आप assertive हो जाएं. This is particularly when you are facing harassment at your workplace, when there are gender issues, when there are other discrimination factors. Being assertive, you can minimize them. Be tolerant, take a perspective thinking, practice anger management, get organized, ventilation, humor, Diversion and distraction. These are some of the techniques which help us to change our behavior. We can be more positive, we can be more going towards well-being, and we can be psychologically more healthy. Time management is one of the big issues with definitely, not only with students, with this social media and all aspects, with all the executive, with the office bearers. This helps us a lot. some of the tips related to this. Make a list what must be done, should be done, what would you like to do. So must shall get your priority. Cut out time wasting, learn to drop unimportant activities, say no or delegate, and proper ventilation facilities. All these can help us. Examine your diet, which is really, really important. It's the healthier, balanced diet which increases your immunity, not only towards physical health, towards your psychological health. लेकिन unfortunately फैशन बन गया है, अब सारी कुक डाइट्स का, फूड पांडा का और क्विक ऑर्डर्स का पेरेंट्स बड़े शौक से चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं, खुद ही मंगवा लेते हैं, घर आ जाता है कुक फूड एवरी टाइम. और जंक फूड विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जो हमारी इम्यूनिटी को लो कर रहा है. तो बेटर हेल्थियर Diets के लिए of course will need to lower salt intake, lesser intake of refined sugar, lower caffeine intake, add to diet vegetables, fruits, vitamins, water, and don't miss a meal. very important. Then of course rest can help us. It can help us A lot. Get a minimum of 6 hours of continuous sleep, which is very important. It can rejuvenate our mental and physical health. Then exercise and sports, they help us a lot. अब तो लोग एक ही बच्चे इंटरनेट पे खेलते हैं. यहाँ स्पोर्ट्स से मुराद है फिजिकल गेम्स. At least 20 minutes की walk. 5 times a week. वैसे पूरा हफ्ता करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन at least it's 25 days or 20 minutes. What you can do a brisk walk simply.
और अगर आप जिम ज्वाइन कर लें, either way, any of the things, any of the games you can play, that is going to help us. And what helps us? It releases endorphins. Endorphins क्या है? हमारे natural opioids हैं, जो आपको euphoric effect देते हैं, जो आपको painkiller effect देते हैं, जो आपको pleasant आपके mood को करते हैं. So exercise and your mental health goes together. तो exercise करें कि तालियां गा के भी अपने आप एक्टिव करने जाते हैं और exercise को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें. Then talking and sharing, which is very very important. This shall be a shoulder in the तो वो आंसू जो आप नहीं आंखों से बहते कहते नहीं है, वो फिर आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं. डेफिनेटली योर हेल्थ इज मोर कॉम्प्रोमाइज. ऑर्गेनाइज करें हम अपनी लाइफ को. लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए. दिस कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स इन बेटर वे. So they can increase that when your life asks for care, time management is care करती है, take charge of your life. सारी जिंदगी इसी में ना गुजारते हैं. लोग क्या कहेंगे? अपनी लाइफ को खुद जिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अपने सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए. स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. हमारे यहाँ मतलब एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि फी भी आखिरी डेट पे जमा करवानी है, बिल भी लास्ट डेट पे जमा करवाना है. सुस्ती का कल्चर है. ऑफ कोर्स विच इंक्रीज स्ट्रेस एंड टेंशन. तो ऑन टाइम चीज़ें हम कर लें, उनको पहले से प्लान कर लें, वक्त पे पढ़ लें, वक्त पे अपने काम कर लें. दिस हेल्प्स अस अ लॉट, सेव नॉट मेनी स्ट्रेस एंड टेंशन, and it gives us more healthy life. So not to match tomorrow or later, it's now which can help. and do something to learn Which can give you relaxation, definitely. You can find your own, have fun in your life. And too many people look for an easy answer to stress management by misusing alcohols and drugs. So long-term devastating effect है इसके. Don't be get influenced by media, by Devdas, and by so many other stories of कि भाई को सिगरेट लगा and all that, जो TikTok and all that, they can spoil our life. So a big no to drugs. And manage your screen time, which is very very important, which is affecting our lives. Not only kids, It's everyone's life. Cell phone, tab, laptop, LED, they can all cause screen addiction. be aware of them. And being thankful. अगर आप शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, तो आप और नवाजे जाते हैं. और not only आप शुक्रगुजार हो अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के, अपनी फैमिली के, अपने टीचर्स और ट्रेनर्स के, अपने फ्रेंड्स के और बाकी सब के. And this is a big stress coping technique, and of course definitely it helps you in future. And then social investment क्या है? Helping others, to help those जो रिस्पॉन्स में आपकी हेल्प ना कर पाए. आप एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं डेफिनेटली, जो आपको रिस्पॉन्स बैक नहीं देते, लेकिन उसका आपको मार्कअप मिलता है ह्यूज एवरी डे इन योर लाइफ. अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो प्लीज बी अवेलेबल फॉर देम. डोंट बी हर्डल एट बीसीए. सुपरवाइजर्स को रिक्वेस्ट करें, चलो फैसिलिटेट नहीं करना, हर्डल ना करें. पीएचडी के ऊपर ना बैठ जाए, एमफिल को लेके ना बैठ जाए, करने दे लोगों को, उनको फैसिलिटेट करें प्लीज. तो यहाँ पे हम ताली बजाएंगे. help others and this is paying you back in countless ways with huge markup. ये आपकी सोशल इन्वेस्टमेंट होगी. रिलैक्स करें इन जो लाइफ में एनी वे सिंपल पाँच की हेल्प कर सकता है. बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव साइकोलॉजी की लास्ट 2 स्लाइड्स हैं. क्या एट्रीब्यूट्स हैं which helps us. और ये हमारी जो कैप्लान की टेक्स्ट बुक है उसमें पब्लिश है ये चीज़ें. डिफरेंट जो लोगों पर रिसर्च की, देखा कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिससे ज़्यादा लोग खुश और हेल्दी रहते हैं. एंड दीज वर सम ऑफ दी थिंग्स. नंबर ऑफ फ्रेंड्स. सो बी अ सोशलाइजर. अगर आप लोनर नहीं है तो उसको चेंज करें प्लीज. जितना आप लोगों से मिलते हैं उतना आप साइकोलॉजिकली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. बीइंग मैरिड, इसका मतलब ये नहीं कल शादी कर लें, बट इफ यू हैव गॉट more chances to get married, you are more healthy, relatively strong. Extrovert होना, grateful होना, पहले भी हमने बात की कि कुछ मिला रहा है. Religious होना, आपका जो भी faith है उसके साथ अटैच है.
तो this is one of the positive aspects of psychology. Pursue your layer activities and employment. Busy होना employment means it's not the income. आप कितने मसरूफ हैं. कुछ लोग वेले मसरूफ होते हैं. कुछ लोग जब सो के थक जाते हैं फिर आराम करते हैं और फिर सोना शुरू कर देते हैं. तो खुदा के लिए बिजी हो जाए अपनी लाइफ में, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी वेकेशंस को, अपने संडेज को प्लान करके गुजारेंगे तो यू विल रिमेन मोर हेल्दी एंड मोर स्ट्रॉन्ग. समरी क्या है? समरी है पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग एंड अचीवमेंट. आप इसको पैमरा कह लें या परमा कह लें, जो भी है. तो पैमरा से याद रहता है बिजली बहुत बंद होती है और दैट कैन हेल्प अस. सो होप, जैसे सर से बात करके, होप शुड बी आवर वेपन ऑन डेस्परेट ग्राउंड्स. एंड आई होप देयर शैल बी नॉट मेनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आप आपस में शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने हमें मौका दिया.